extend a warm and sincere welcome on behalf of NIT Delhi to Honorable Minister of External Affairs, Dr. Jaishankar ji, Padam Shri Hansraj Hansji, Member of Parliament, North West Delhi, Shri Virendra Sachdeva ji, BJP President Delhi, Professor Ajay Kumar Sharma, Director NIT Delhi, Shri Ravindra Kumar, Registrar NIT Delhi, distinguished guests, faculty, staff, and students of NIT Delhi. As we gather here in this auditorium for intellectual curiosity and innovation via our program Samvad, we are privileged to have in our midst our leaders of remarkable stature and global influence. The Honorable Minister, Dr. Jaishankar ji, has dedicated his life to represent our nation on the international stage, building diplomatic relationships and shaping the policies that contribute to our country's progress and prosperity. Moving ahead, to begin with the program, I request Honorable Minister of External Affairs, Dr. S Jaishankar ji, Padam Shri Hansraj Hansji, Member of Parliament, North West Delhi, Shri Virendra Sachdeva ji, BJP President Delhi, Professor Ajay Kumar Sharma, Director NIT Delhi, Shri Ravindra Kumar, Registrar NIT Delhi for lighting of lamp. Thank you so much, sir. Today we stand at the intersection of academia and diplomacy, recognizing the crucial role that both play in shaping our nation. The presence of Honorable Dr. Jaishankar ji symbolizes the recognition that technology and innovation have become integral to our nation's external relations and global engagement. Dr. S Jaishankar is India's External Affairs Minister since May 30, 2019. He is a member of Upper House of India's Parliament from the state of Gujarat. He was Foreign Secretary from 2015 to 18, Ambassador to United States from 2013 to 15, Ambassador to China from 2009 to 2013, and Ambassador to Singapore from 2007 to 2019, and Czech Republic from 2000 to 2004. He has also served in other diplomatic assignments in embassies in Moscow, Colombia, Budapest, and Tokyo, as well as in the Ministry of External Affairs and President Secretary. He was also President, Global Corporate Affairs at Tata Sons Private Limited. He is the recipient of Padma Shri Award in 2019 and has written a widely acclaimed best-selling book, The India Valley Strategies for an Uncertain World, which was published in 2020. I request Professor Ajay Kumar Sharma, Director NIT Delhi, to kindly welcome Honorable Minister of External Affairs, Dr. S Jaishankar ji. Now
again I request Professor Ajay Kumar Sharma to welcome Honorable Hansraj Hansji. I request Shri Ravindra Kumar, Registrar NIT Delhi, to welcome Shri Viren Sachdeva ji, BJP President Delhi. Now starting with our program, I request Shri Viren Sachdeva ji to praise the occasion by his opening remarks. Thank you so much, sir. Now I request Padam Shri Honorable Hansraj Hansji to motivate the young minds of NIT Delhi with his words. मंच पे आसीन ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर श्री जयशंकर जी, आप सब जानते हैं कि हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी की वजारत के कैबिनेट के श्रृंगार हैं। ये जो उनके नेतृत्व में भारत तरक्की कर रहा है और फॉरेन पॉलिसी ख़ास तौर पे सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, पूरी दुनिया में हमारी कंट्री किस लेवल पे है, तो उसमें सीधा सीधा हाथ हमारे मंत्री जी का, श्री जयशंकर जी का है। ये हमारे लिए बहुत ही बाइस फ़ख्र है, खुशी का सबब है कि ये तशरीफ़ लाए। बहुत कम समय इन्हें मिलता है, इतने मसरूफ़ रहते हैं, बिज़ी रहते हैं, तो हमारी इल्तिजा गुजारिश पे, विनती पे ये तशरीफ़ लाए। तो मैं यही कहूँगा कि कहाँ ये मर्तबा अपना कि तकलीफ़ शराकत दूँ, मगर मेहमान फ़कीरों के हुए हैं बादशाह अक्सर, तो इनका आना बहुत बड़ी बात है। तो मंच पे हमारे स्टेट प्रेसिडेंट मिस्टर वीरेंद्र सचदेवा जी, जो बहुत ही कर्मठ, डायरेक्टर साहब प्रोफेसर अजय कुमार जी, वो भी तशरीफ़ फरमा है, श्री रविंद्र कुमार जी रजिस्ट्रार साहब, सामने मेरे बीजेपी का सारे ज़िला अध्यक्ष, प्रभारी साहिबान, साहबका विधायक, फैकल्टीज़, स्टूडेंट्स, आप सबको एक बार फिर नमन, नमस्कारम। हमने कम बोलना है, हमने सुनना है। आज उस शख्सियत को सुनना है जिस शख्सियत ने इतनी मेहनत की कि पूरी अभी अमेरिका का टूर आपने सबने देखा है, तो फिर आपने ये भी देखा होगा कि क्या जलवा हुआ है वहाँ पे। और मेरा इतना ही कहना है कि इंसान पैदा होता है कुछ अचीव करने के लिए, अगर माँ बाप की आशीर्वाद लेके, उस्ताद साहिबान, टीचर साहिबान, गुरु साहिबान, आज गुरु पूर्णिमा भी है, आशीर्वाद लेता रहे, तो फिर ऐसी शख्सियतें ही बनती हैं। उनमें से आप में स्टूडेंट, एक साहब भी कभी स्टूडेंट थे, फिर उन्होंने पढ़ाया भी, फिर उन्होंने प्रशासन देखा, आज आप देख रहे हैं कहाँ किस बुलंदी पे है। तो मेरी शुभकामनाएं हैं, आप भी ज़िंदगी में तवारीख का एक हिस्सा आप अपने नाम कर लें, जैसे हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी ने बचपन से लेके अब तक इतनी मेहनत की है कि उस शख्स ने सिर्फ़ और सिर्फ अपनी कंट्री के बारे में, अपने नेशन के बारे में, अपने अवाम के बारे में, अपने लोगों के बारे में सीखा है। लेकिन उनको किसने सीख दी? माँ बाप ने। माता जी ने कितनी मशक्क़त करके उनको पाला पलोसा, तो साथ मैसेज भी दिया कि दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर। किसी ने कुछ भी हासिल कर लिया, इवन आपका भाई भी है, पड़ोसी है, दोस्त है, उसने अचीव कर लिया, वो ठीक है, गुड लक टू हिम एंड देम। अगर आपने कुछ हासिल नहीं किया तो कुछ नहीं। इसलिए उन्हें तालीम थी कि दयारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नया ज़माना
नई सुबह शाम पैदा कर। मेरा तरीक, मेरी यानी हिस्ट्री, मेरा तारीख अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। साहब ने, लेकिन इसके लिए मेहनत ज़रूरी है, कमिटमेंट ज़रूरी है, डिटर्मिनेशन ज़रूरी है, क्योंकि कहते हैं कि मिटा दे अपनी हस्ती को, नींद से, आराम से, इवन सूरज से भी शर्त लगानी पड़ती है कि मैं तुझे तेरे से पहले उठूंगा, और नींद से दुश्मनी करनी पड़ती है आराम से, पहले खाक में मिलना पड़ता है। कहते हैं मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। फिर हमें तालीम है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो ये लोग जो हिस्ट्री का हिस्सा बन जाते, हिस्ट्री बना देते हैं, इन पे बहुत कृपा होती है। हमने इनको सुनना है। मैं अदना सा सेवादार होने के नाते एक बार फिर उनको वेलकम, खुशामदीद, खैर मकदम कहता हूँ, और आज हमने उन्हीं को सुनना है। बहुत मेहरबानी, इन्होंने टाइम निकाला। इनका आना ऐसे ही है जैसे ताजमहल देखने सब जाते हैं, ताजमहल खुद चल के आ जाए तो कमाल ही होता है। थैंक यू वेरी मच। The Honorable Minister Jaishankar ji's presence here today serves as an exceptional opportunity for us to engage in meaningful interaction with him. His insights with global affairs, experiences in international agreements and relations, and their understanding will undoubtedly inspire and enlighten us. I extend a warm and resounding welcome again to you, sir, and thank you for gracing us with your presence. We eagerly wait for the wisdom and the guidance you will impart upon us today, sir. मेरे संसद के साथी श्री हंसराज हंस जी, हमारे बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट श्री वीरेंद्र सचदेवा जी, डायरेक्टर NIT प्रोफेसर अजय कुमार शर्मा जी, रजिस्ट्रार NIT रविंद्र कुमार जी, हमारे भाजपा के साथियों, अध्यापकों, फैकल्टी, स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं अपना खुशी प्रकट करना चाहूँगा कि आज आप सबको मिलने का मुझे आज अवसर मिला। मैं दिल्ली का निवासी हूँ, पूरी ज़िंदगी मैंने दिल्ली में बिताई है। दिल्ली के अलग अलग जगह में मैं कभी न कभी तो रह भी चुका हूँ। मैं अभी कह रहा था कि जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, तो उस समय थोड़ा समय मैंने मुखर्जी नगर में भी लगा, वहाँ ठहरे थे। तो इस संपर्क के कार्यक्रम में दिल्ली में अलग अलग संस्थाएं के साथ, लोगों के साथ, और ख़ासकर जो युवा पीढ़ी जो है उनके साथ मीटिंग करने का जो इरादा जो है, मुझे लगा कि बहुत ये अच्छा कार्यक्रम है। तो आज जो है मैं इसको संपर्क को मैं बहुत सीरियसली लेता हूँ, तो मैं आपको लंबी भाषण नहीं दूंगा। आपके सामने मैं 2-3 चीज़ें रखना चाहूँगा, और फिर अगर आप इंटरैक्शन करें, आपके यहाँ आपके साइड पे कुछ सवालें होंगी, कुछ हो सकता है कुछ सलाह भी हो, कुछ आपके ख्याल होंगे, तो मैं सुनना चाहूँगा। और अगर आपको लगे कि मेरे साइड से कुछ कहना है तो मुझे कहने में कोई संकोच नहीं। आप लोग जो हैं टेक्नोलॉजी की दुनिया से, मैं विदेश नीति की दुनिया से, तो हमारी मीटिंग ग्राउंड किधर है? हमारी मीटिंग ग्राउंड 2 जगह है। एक कि आज फॉरेन पॉलिसी में टेक्नोलॉजी की बहुत अहमियत है, और दूसरा कि आपकी दुनिया, टेक्नोलॉजी की दुनिया जो है वो बहुत ग्लोबलाइज्ड दुनिया है। तो आप चाहें ना चाहें, दुनिया आपके यहाँ तो आएगी, और ये अपॉर्चुनिटीज़ के तहत भी आ सकती हैं, कभी ये चुनौती भी हो सकती है। अगर आप सोचें कि हम सब लोग पिछले
3 साल से वो महामारी के समय से निकले हैं। अब ये किसने सोचा था 2019 में कि कहीं दुनिया में कुछ होगी और अगले 2-3 साल जो है हमारे ऐसे ही निकल जाएंगे, क्योंकि दुनिया से कुछ आई थी और हमारे पूरे जीवन में इसका इतना प्रभाव हुआ। या आप ये भी देख रहे हैं कि यूक्रेन में युद्ध हो रहा है। अब युद्ध यूक्रेन में हो रहा है, हाँ एक बात है कि हमारे कुछ वहाँ छात्र भी हैं, पर उसके अलावा आप रोज देखते हैं कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने की संभावना है, अनाज की कीमत जो है उसके दाम बढ़ जाते हैं। तो ये दुनिया जो है आप लोगों को समझना चाहिए कि वो ज़माना गया जब हम सोचते थे कि ये हमारे नेशनल बाउंड्रीज हैं, ये भारत है, दुनिया कहीं बाहर है, हम लोग घर में बैठे हैं। ये बाहर आउटसाइड इनसाइड का जो वो दीवार जो है, उस दीवार को ग्लोबलाइजेशन ने तोड़ दिया है। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसके लिए हमें 2 चीज़ चाहिए। एक हमें जो है आप जैसे लोग चाहिए जो भारत के एक किस्म से फ्यूचर है, जो टेक्नोलॉजी एनेबल्ड है, जो जिनको दुनिया की समझ है, जो दुनिया को अपने साइड से हम अपना योगदान भी दे सकते हैं, हम अपनी पहचान भी बना सकते हैं। और इसीलिए मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे साथी हंस जी ने पीएम के यूएस विजिट का जिक्र किया था, क्योंकि अगर आप ये यूएस विजिट को देखें, आपने सबने देखा होगा, सबने फ़ोन में, तो अब सब हम लोग फ़ोन पे ही लगे रहते हैं सुबह से शाम तक। अब क्या देखा आपने? देखा कि आज तक पहले भी बहुत प्रधानमंत्री यूएस जा चुके, इस बार ये विजिट कुछ अलग स्तर का विजिट था। क्यों था? ये था क्योंकि एक मोदी जी की अपनी पहचान, मोदी जी की छवि, मोदी जी का एक किस्म से जो उनको दुनिया में आज लोग मानते हैं कि दुनिया में और ख़ासकर डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में वो अब एक बहुत सीनियर, एक्सपीरियंस्ड, क्रेडिबल लीडर है। और जब मोदी जी कुछ तय करते हैं या वो कुछ पोजीशन लेते हैं, इसका पूरा असर जो है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, पूरी ग्लोबल पॉलिटिक्स में होता है। एक तो लीडरशिप, फिर है आइडियाज। कि पिछले कुछ सालों में देखें, पिछले 9 साल में देखें कि दुनिया के बड़े बड़े आइडियाज वो भारत से आए। जब पेरिस में क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुआ तो मोदी जी ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस का प्रस्ताव रखा। उसके बाद उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में डिजास्टर रेजिलियंस, जो क्योंकि आप जानते हैं क्लाइमेट के कारण हर साल, हर महीने, हर हफ्ते कहीं ना कहीं कुछ डिजास्टर होता है, तो डिजास्टर के लिए हम कैसे अपनी तैयारी करें। या 2015 में उनका प्रस्ताव था कि दुनिया जून 21 को योग दिवस के रूप में मनाए, और आप सब जानते हैं कि ये योग दिवस, इट हैज बिकम एक्चुअली टुडे रियली अ ग्लोबल फिनोमेना। या आज फूड सिक्योरिटी की चिंता है, और उन्होंने जो मिलेट्स पे जो बल दिया है, अब इट हैज एक्चुअली बिकम अ ग्लोबल मूवमेंट टुडे कि एवरी कंट्री, हम खुद जो है, क्योंकि मिलेट्स में बहुत कम पानी का उपयोग होता है, कि मिलेट्स को ग्रो करने के लिए किसानों को तो फायदा होगा, पर पूरे माने पब्लिक को भी, और दुनिया में अगर मिलेट्स खाने की परंपरा हम एक बार और इसको, क्योंकि ये हमारी परंपरा थी एक समय, तो इसको कैसे आगे बढ़ाएं। तो एक तो है कि उनका स्ट्रक्चर, दूसरा उनका आइडियाज, तो तीसरी बात जो है वो बात है कि जब वो बाहर जाते हैं तो वो 140 करोड़ भारतवासी उनकी टैलेंट, उनकी ताकत को वो प्रकट करते हैं। और जो आपने वो दृश्य जो देखा, वो जो है उसकी क्रेडिट पूरे देश को जाता है, और उसकी क्रेडिट खासकर प्रधानमंत्री को जाता है, क्योंकि
वो पूरे देश की एक एनर्जी एक किस्म से कैप्चर करके उसको सामने रखते। और ये जब मेरा सौभाग्य है कि जब वो जाते हैं ऐसे मौके पे, मुझे जाने का वहाँ अवसर मिलता है, तो मैं खुद एक किस्म से साक्षी हूँ। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है मैंने विदेश नीति में बिताई है। मैं पिछले 45 साल से मैं देख रहा हूँ कि भारत की जो ग्लोबल इम्पैक्ट क्या है। और यह मैं आपको कह सकता हूँ कि आज जो है ये ग्लोबल इम्पैक्ट का उदाहरण जो है, आपसे ये यूएस विजिट से ज़्यादा इससे और अच्छा उदाहरण नहीं मिल सकता। पर मैं आपके विषय पे आना चाहता हूँ, क्योंकि ये विजिट टेक्नोलॉजी पर भी थी। अगर आपने देखा होगा कि उनका सबसे पहला उनकी जो मुलाकात जो हुई, फर्स्ट मीटिंग जो थी वो एलोन मस्क के साथ थी। उसके बाद अगर हम बहुत सारे लोगों से मिले, उनका स्वभाव है, वो तो सोते नहीं है, सुबह से शाम तक उनके यहाँ मीटिंग, मुलाकात, एक्टिविटी कुछ ना कुछ होता रहता है। आप ही सोचिए, टिम कुक, सुंदर पिचाई, सत्या नडेला, एलोन मस्क, बोइंग के हेड, जनरल इलेक्ट्रिक के हेड। और ये क्यों आए? ये आए क्योंकि इनके मन में है कि आज जो है अगर आप देखें दुनिया में टेक्नोलॉजी पूल, टैलेंट पूल किधर, टैलेंट पूल को टेक्नोलॉजी पूल कैसे बना, ये है उनके मन में। और ये जो मीटिंग्स जो थी ये इसीलिए थी क्योंकि आज जो है दुनिया भारत की तरफ देख रही है और भारत की युवा पीढ़ी की तरफ देख रही है। और इसीलिए देख रहा है क्योंकि मोदी जी जो है वो किस्म से उनके लीडरशिप, उनके विजन, उनकी डिलीवरी के कारण अब भारत की ग्लोबल स्टेज पे ये पहचान बन चुकी है। और इसका जो लाभ जो है आप ये आने वाली पीढ़ियों को मिलेगा। तो जो परिणाम जो निकले ये भी ज़्यादातर जो है ये टेक्नोलॉजी की दुनिया में थे कि आप जानते हैं कि आजकल सेमीकंडक्टर्स की इम्पोर्टेंस क्या है, कि लोग कहते हैं क्योंकि ये तो डेटा की दुनिया है, कुछ भी आप करें, माने फ़ोन का मामला नहीं, आप गाड़ी में चढ़ें, आप लिफ्ट में ऊपर आए, हर चीज़ हमारी जीवन जो है आज चिप पर निर्भर। और कौन चिप बनाता है, किस क्वालिटी का बनाता है, कितना डेटा डाल सकता है उसमें, ये है आज सचमुच फॉरेन पॉलिसी। और मोदी जी क्योंकि उनकी दूरदृष्टि है, वो उन्होंने तय कर लिया है कि भारत जो है इसमें पीछे नहीं रहेगा, कि उन्होंने एक सेमीकंडक्टर मिशन चलाया है। और आप देखिए पहले की सरकारें भी कुछ न कुछ चलाती थी, वो भाषण होता था, कुछ इरादे भी थे उनका, ये नहीं था कि वो नहीं करना चाहते थे, पर ज़्यादातर जो है इरादे थे वो इरादे वहीं के वहीं रह जाते थे। यहाँ जो है एक बार उन्होंने तय किया कि मुझे सेमीकंडक्टर मिशन चलाना है। तो इस बार अगर आप परिणाम देखेंगे कि दुनिया की ये मशहूर कंपनी माइक्रोन जो है वो टेस्टिंग असेंबली फैसिलिटी उन्होंने कमिट की। एक कंपनी है अप्लाइड मटेरियल्स, जहाँ भी सेमीकंडक्टर कोई भी प्लांट हो, अप्लाइड मटेरियल्स की मशीनरी लगती है, वो अपना इंजीनियरिंग सेंटर खोलेंगे। अगर ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो उसमें भी एक बहुत फेमस कंपनी है लैम्ब रिसर्च, उन्होंने भी वादा किया है कि 60,000 लोगों की वो ट्रेनिंग करेंगे। तो और जो गूगल जो है, अब उनका डिसीजन था, जो सुंदर पिचाई ने पीएम को बताया कि उनका ग्लोबल फिनटेक सेंटर जो है वो भारत में लगेगा। तो मैं आप लोगों को ये मैसेज देने आया हूँ कि आगे की दुनिया जो है ये टेक्नोलॉजी की दुनिया है। ये जो लोग टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हुए हैं वही लोग हैं जो हमारे यहाँ तो परिवर्तन लाएंगे, पर आगे जब मेरी दुनिया के लोग जब कहते हैं कि इंडिया की कैपेबिलिटी क्या है, हम फॉरेन कोई कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, कोई नेगोशिएशन में जाते हैं, हमारी ताकत जो है वो आप लोगों पर निर्भर है, वो आप लोगों की टैलेंट
टैलेंट टू टेक्नोलॉजी, ये चेंज कैसे लाएं। और ये है प्रधानमंत्री का सपना कि जब वो कहते हैं कि मैं अमृत काल में अगले जो 25 साल में मैं भारत को मैं विकसित देश बनाना चाहता हूँ, उनके मन में है कि ये टेक्नोलॉजी की पावर है। भारत विकसित देश तभी बनेगा जब हम पूरा टेक्नोलॉजी को पूरा एम्ब्रेस करेंगे। और टेक्नोलॉजी की ताकत आप खुद देखें पिछले सालों में कि हम कोविड से कैसे निकल आए। हमारे यहाँ क्योंकि हमने वैक्सीन बनाई, हमने प्लेटफॉर्म खड़ी रखी। कुछ लोगों ने देखा होगा, मैंने एक बार कहा था, मेरा खुद अनुभव था कि मैं अमेरिका गया था, मैं अपने लड़के के साथ कहीं रेस्टोरेंट में गया, तो हमसे पूछा उन्होंने कि आप हमें दिखाइए अपना कोविड सर्टिफिकेट दिखाइए। तो मेरे लड़के ने अपने बटुए से मैंने फोल्डेड थोड़ा कागज़ निकाला और उनको कागज़ दिखाया, मैंने अपने फ़ोन पे दिखाया। और उस न्यूयॉर्क रेस्टोरेंट में तब तक किसी ने फ़ोन में देखा नहीं था। मैंने फ़ोन में लोग मेरे फ़ोन को देख के मैंने एक छोटी सी जो भी सर्विस थे, कस्टमर थे, सब फ़ोन पे देख रहे थे कि भाई ये है क्या। तो आज जो है हम बहुत सारी चीज़ें कर सकती हैं। वी कैन बी फर्स्ट इन मैनी थिंग्स, वी डोंट हैव टू कॉपी एनी मोर। हमें जो टुडेज इनोवेशन, टुडेज क्रिएशन, दिस इज आवर फ्यूचर एंड दिस फ्यूचर इज व्हाट ऑल ऑफ यू आर अबाउट। वन अदर थिंग एंड देन आई वुड लाइक, अगर उसके बाद हमारी इंटरेक्शन शुरू हो, और वो मैं थोड़ा आपको G20 के बारे में बताना चाहता हूँ। G20 जो है आप जानते हैं दुनिया के सबसे शक्तिशाली 20 देश हैं, और हर साल G20 की जो अध्यक्षता जो है एक देश से दूसरी देश जाती है। हो सकता है कि हमारे पहले आपने G20 के बारे में सुना ही नहीं हुआ, क्योंकि अगर G20 की कुछ कार्यक्रम हुई कहीं, हमारे पेपर में नहीं आया होगा, सोशल मीडिया में भी थोड़ा बहुत कुछ आया होगा, वो हमारे जो प्रोफेशनल लोग हैं वही देखेंगे। दुनिया की पब्लिक की इमेजिनेशन ये पहला G20, ये देश की इमेजिनेशन की G20। और ये इसीलिए है क्योंकि आम स्तर पर जो भी सरकारी कार्यक्रम होती है वो कहीं राजधानी और 2-3 बड़े शहरों में होती है। इस बार जो है ये पूरी देश में हुई है, देश के करीब 60 शहरों में हुई है, और पब्लिक को इसमें पहली बार जोड़ा जा रहा है कि G20 के इवेंट्स में साथ ही साथ कुछ यूनिवर्सिटी में कुछ हो, कुछ सिविल सोसाइटी कुछ करे, कुछ NGOs कुछ करें, हमारे कल्चर, हमारे जो इतिहास परंपरा, इसकी एक प्रदर्शन। और इसको मैं आपको एक सेंटेंस में समझा देता हूँ। आप जानते हैं कि G20 में करीब 20 तो हैं सदस्य, 9 देश और अतिथि के रूप में आ रहे, 14-15 जो हैं बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो मान लीजिए 45 पार्टिसिपेंट्स। ये दुनिया के सबसे इन्फ्लुएंशियल लोग हर मीटिंग में, क्योंकि G20 की करीब 200 मीटिंग होती है। ये एक्सरसाइज है हाउ टू इन्फ्लुएंस द इन्फ्लुएंसर्स। ये दुनिया के मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंसर्स हैं। जब वो भारत आएंगे, 60 उनका जो एक्सपीरियंस जो होगा हर प्रांत का होगा, 60 शहरों का होगा, और जो कल्चरल, टूरिस्ट, पब्लिक इंटरैक्शन एक्सपीरियंस जो ऑफिशियल मीटिंग के अलावा हो, इसका इम्पैक्ट जो है, मान के चलिए इसका इम्पैक्ट जो है लॉन्ग टर्म चेंज होगा कि जो इसके बाद दुनिया की सोच भारत के बारे में बदल जाएगी। और ये भी एक किस्म से खाली मोदी जी सोच सकते हैं कि, क्योंकि हम लोग देखिए हम अपना काम तो करते हैं, पर वो लीडर वो होता है वही इशू को अपने इमेजिनेशन से, अपने क्रिएटिविटी से, अपने विजन के कारण उसको अलग स्तर पे ले जाते हैं। तो ये मैंने सोचा कि मैं ये 2 चीज़ें आपके सामने रखूं। आपको मुझे पता है, क्योंकि मैं खुद सोशल मीडिया पे थोड़ा तो ध्यान देता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि हमारे बारे में कमेंट्स वगैरह होती हैं।
आज जो है मैं आपको, आप सब्जेक्ट मुझे बताइए, मैं आपको विस्तार में बता सकता हूँ कि आज जो चेंज आया है, आप हो सकता कि जो ऑपरेशन जो हमने सूडान या यूक्रेन में किया है, कावेरी और ऑपरेशन गंगा, या जो हमने वैक्सीन जो दुनिया को दी है, या आप देखते हैं कि विकासशील देश जो है, आज उनको लगता है कि मोदी जी ही हैं एक लीडर जो उनके हित जो हैं उनको वो दुनिया के स्टेज, दुनिया के कॉन्फ्रेंस टेबल में रखें। तो परिवर्तन तो बहुत है। तो मैं यहाँ मैं रुक जाता हूँ और आपके मन में और मैं चाहूँगा कि खासकर जो स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़्यादा इंटरेस्ट लें इसमें, पहले उनको प्रेफरेंस देना चाहूँगा कि आपके मन में जो कुछ सवाल हैं या कुछ कमेंट्स हैं वो मैं सुनना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। Your presence here today is a testament to your unwavering commitment to our nation's external relation and recognition of the vital role that technology plays in global dynamics. Thank you. Now we can start with the question and answer session. So any questions from the student side, please? Good morning, sir. Sir, I am research scholar in NIT Delhi. Sir, I have a query. Just your name, please. Ankush Katheria, sir. Welcome to our NIT Delhi, sir. It's our honor to watch you live at our institutes. I have a query, sir. Like India stands now fifth in the ranks fifth geopolitical. India stands fifth in geopolitical, but according to Henry and Partners, still our passports rank 82nd in the global. So what's the main reason behind it? Also, sir, if we talk about the top rankers in this list, we can only see the Western countries in the top rankers. So is there still some Western influence over there? And sir, if we talk about other, with respect to BRICS countries like Brazil, Russia, they still have higher ranks from India. So what we are working on this? आगे 1-to-1 रिप्लाई ठीक है, बाद में देखेंगे if necessary. देखिए, आंसर इज टू यू इज दिस. टुडे वी आर द फिफ्थ बिगेस्ट इकोनॉमी. We are also the most populated nation. We are number 1 in population. Passport ranking does not depend only on size of economy. Sometimes you can have a very small country with a high passport ranking. Because what does passport ranking depend on? The passport ranking looks how many people travel, how much is legal travel, how much is illegal travel, what is demand for visa. So there are many factors which go into this. Today, what you say is correct. Our effort is how to improve passport ranking, because if we improve passport ranking, जो लोग legally जाते हैं, they are treated much better. That is really the issue. To do this, what we have been doing for last 9 years is to have agreements with different countries that how to increase legal mobility, not only migration, mobility. So tomorrow, I give you an example. Say student wants to go and work in summer in Australia, okay, or Austria or Germany. We are today negotiating agreements with these countries where they will allow Indian tourists, Indian students, Indian professionals to come on a more regular, predictable basis. They will open their doors more than they would do before. And I think once these agreements, because many of these agreements have been done. Prime Minister was in Australia some time ago, just 1 month ago. So at that time we did the agreement with Australia. Last year we did with Germany. So what will happen is, as more focus comes on legal mobility, and what we have to do today, illegal mobility hurts us. See, whenever there is any problem, you read in paper somebody took the wrong route, they hurt the people who take the right route. So we also have to ensure this.
which we are trying. So I am very confident that our standing will improve. But I will also say this. See, many years, say 10 years ago, if we went outside, most countries, they used to study India, but they did not have any great interest in interacting with us. Today that has changed. And as I said, why has it changed? It has changed because we have a strong leader who is making an impact. But it has also changed because today the world, see, where there is demand, where people want technology, workers, there is no demography. The population is less. If you look at Japan, you look at Germany. So, one of the issues which Prime Minister has asked us to do, he tells us, look at the world like a global workplace. Our people should have the opportunity to work not only in India, but work all over the world. And it doesn't mean that you have to leave the country. Many people, see today, number of people working in airlines, number of people working in merchant shipping, number of people working even on short-term jobs in technology companies. All this is increasing. When COVID happened, we found how many people, we brought back 70 lakh Indians because through the Vande Bharat mission, 70 lakh, nobody has done this before in the world. Because today people are going out as part of their job and as tourists and as students. It is requested, kindly ask one question at a time, please. Good morning everyone, I am Shruti, research scholar from NIT Delhi. My question is that, is there any one single platform where we can track the MOU signed by the government regarding foreign research collaborations? And also, as you mentioned about public involvement and innovation, so is there any platform where as research scholars we can share our ideas for innovative research areas? I'll take 3 questions. तो आप इनको दे दीजिएगा and किसी और को दे दीजिए. I'll take one more after that, please. Good morning, sir. Welcome to NIT Delhi. Sir, I am not asking question regarding the foreign policies. I am regarding question your personal life experience. As you tell us, राजेंद्र नगर पे भी में से गए हो, IFS ऑफिसर रहे हो, उसके बाद आप फॉरेन मिनिस्टर रहे हो. तो सर आपको कौन सी लाइफ बेस्ट लगी कि एज अ ब्यूरोक्रेट और एज अ? सबको जवानी अच्छी लगती है, किसको नहीं लगती, but I will take it seriously. I will give you an answer. Sir, because you are my best friend और because I follow you, आप जैसे ही बोलोगे तो उस हिसाब से हम अपने गोल्स को उनको Okay. Sir, good morning everyone. No, close to you. Good morning everyone. I'm Hon'ble research scholar of NIT Delhi. Sir, I have a query. What is the role of research scholar after completing the PhD in government sector rather than in teaching field and being a scientist? Because vacancies are limited and there is, after completing a good research, what is the good future of a research scholar? Okay. So, you see, if you first question, if you have foreign collaboration program, is there any platform, single platform which lists all the foreign collaboration platform? No, I don't think there will be a single platform. I think what you should do is either follow your field, or if there is one country or area you are interested in, look at it. I can only say
in the foreign ministry, we tried to help by putting on our website all the agreements with as much detail as possible. Say, for example, this time when Prime Minister went, we had some space agreements. The National Science Foundation and our Department of Science agreed on 35 projects. So you'll have to some degree, chase up the, with the particular institution. But I think what you have raised is a very good point, and it is a point which right now we are also thinking how to promote research, more R&D in the country. Last week in the cabinet, we passed the proposal to create something called a National Research Foundation. This will be created very quickly. The bill will be brought to Parliament. So I would say we are moving in a direction where definitely there will be much greater government support, and we hope private support, university support for R&D, because our future today is very much you cannot become a developed country without doing the R&D which developed countries do. So I will move to that young lady's question. See, what is the future therefore of research people? It can be a problem. I know. I was also at one time doing my PhD before I sat for my civil service exam. So sometimes when you do research, then you say, okay, research means I have to settle for a teaching job or my opportunities are limited. I think today there is very much more which has opened up, because the technology companies, even the old, the established companies. For example, I worked before I became minister with the Tata Group. Now, many of them today are employing technology specialists in very large numbers. This is going to be a big demand. So, definitely, if you like teaching, I would say I'm in a teaching institution, I would say yes, of course, people should teach. But beyond that, in the commercial space too, in applied research also, I think today there is many more possibilities than there was before, because the more we promote innovation, more we promote startup, more we promote new companies which will actually give our economy a different kind of direction. That is really where the big future is. So, आपका सवाल जो है, which part of my life? Say, no, please. Look, I would say in life, most of us don't know at the start where we are going. When I was in my 20s, if somebody told me, forget being a minister, even being a diplomat, it was not something which was so obvious to me. Sometimes you try things, when you try things, you succeed in some, you don't succeed in some. Everybody thinks, okay, foreign service mein the that he passed the UPSC, which is correct. But I will tell you in all honesty, I also sat for some exams I did not pass. So, had I passed that, maybe I would have gone somewhere else. So, life is trial and error, and you have to find out what it is you want to do. But I can only give you one advice after so many years. Do what you like doing. If you like something, you will be good at it. Then you will not even think of it as work. That, people who, in any profession, even in politics, those who like politics, for them it is, every day is pleasure. It's like something you enjoy. He's from the world of culture. For him, he doesn't think of it as work. He thinks of it as a natural expression of what is inside him. And that is actually true of all of us, that if you take interest in something, I'm very interested in foreign countries, foreign cultures, etc. So
So for me, I really enjoy what I do. So I then keep doing it with very little homework and well, not very little homework, but I would say with a great deal of natural enjoyment. Good morning, sir. I am Ayush, BTech first year student. My question is, Russia has accumulated billions of rupees that it can't use due to trade surplus, and if it continues, it could make Russia much more dependent on China financially. So what both sides are thinking to resolve this, and what are recent developments on the BRIC currency or BRICS payment system, and what could we expect in BRICS summit that is going to be held in South Africa this year? Thank you. Next. This is the last question, please. Very good morning to all dignitaries, respected members. Sir, as you have told that we are just in the mind of our respected Prime Minister that there is an idea of shifting from talent to technology, and we are in the era of data science and semiconductor design. Then, sir, मुझे ये पूछना है कि जैसे एज ए टेक्नोलॉजिकल स्टूडेंट आई एम प्रतीक सिन्हा इन द एमटेक सेकेंड ईयर, तो जो भी सेमीकंडक्टर डिजाइनिंग हो रहा है, तो जैसे हम लोग देख रहे हैं कि ताइवान जो है उसमें लीडिंग कंट्री है चिप डिजाइनिंग में, तो उस पर चाइना का तो वो रहता है कि उसका अपना कंट्री है। इवन यूएस के भी डिग्निटरीज जाके वहाँ पे फंडिंग कर रहे हैं सेमीकंडक्टर डिजाइनिंग के लिए, चिप के डिजाइनिंग के लिए। और इवन सर हमारे लैब्स में भी जो हम लोग चिप्स और जो भी सवाल पे आए प्लीज। यस सर, जो भी हम लोग लैब्स में जो चिप यूज़ करते हैं वो इवन फॉरेन कंट्रीज़ की, जर्मनी की होती है, जैसे इन्फिनियन, ST माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स। तो अब हमारे प्रधानमंत्री जो है वो मेक इन इंडिया स्कीम पे भी पूरे रिलायबल हैं। तो सर हम लोग मतलब अपने देश में बना हुआ चिप जो है वो जैसे कि देखना चाहते हैं लैब में, वो कैसे पॉसिबल हो पाएगा? थैंक यू सर। एक सवाल और ले लेते हैं, वन मोर क्वेश्चन। Sir, foreign policy regarding emergency visa, like when we get call for conference. This is the last question, please. Or like research collaboration. Okay. नहीं, बात समझ में आ गई। तो आपका जो पहला सवाल जो था रशिया चाइना पे, see, अभी जो है बेसिक पॉइंट इज रशिया till last year their main economic partner were Western countries. After this Ukraine conflict, वो रास्ता उनके लिए बंद हो गया. So mostly what is Russia doing? Russia is turning more and more towards Asia, towards other parts, towards Africa, etc. But mostly Asia, because Asia is very big. So if you see our own trade, our trade before the Ukraine conflict every year was about 12, 13, 14 billion dollars. Our trade last year was $40 billion. So what will happen is that you will see the Asian economies becoming more the partners, and obviously, because China is the biggest Asian economy, it will show up out there. But I think we should not, worry too much about what they are doing with other countries. We should keep our own relationship with Russia going and see how the interests of the Indian people is best served. Because, see, please understand one thing. Today we say foreign policy, and rightly, but decision we make on foreign policy, it affects your life every day. How much petrol you pay, the price of the petrol you make is decided on whether we do a good foreign policy or not. If we had not done a good foreign policy, your petrol price would have been very much higher, and your cooking oil price would have been very much higher. The next iPhone you buy will be very much higher. So today, what we do with other foreign partners actually impacts your life. On what we will discuss at the BRICS meeting, that we'll have to see, because there are many other issues, but there is no idea of a BRICS currency, if I understood your point rightly. That currencies, to my mind, will remain very much a national issue for a long time to come. The chips issue, exactly what you are saying, that is exactly what Prime Minister is trying to do, which is to see if in our semiconductor mission we can also become a semiconductor power. Because look at all of you today. How do we use your talents? We can only use your talent if there is a factory, if there is a design bureau, if there is an environment in which those talents can
express itself. Talent is there in this country. What Modi ji is trying to do is to make talent into technology. For that we have to create an environment or a pathway. That is why today all these collaborations that he is doing, that is why we want today, and chips is very different, it's a very tough industry because it requires very high specs. So you have to create a whole semiconductor environment with all aspects of it. The chip making is I would say, the most high-end part of it. There are many other steps before that. But definitely his ambition is to make India, in a sense, in terms of technology and especially in terms of semiconductor technology, to make us actually become a power. And this America visit was very much focused on that aspect of it. जो आपका सवाल जो था इमरजेंसी वीज़ा में, देखिए ऐसा है, जो वीज़ा जो है वो दूसरी देश देती है, हम लोग पासपोर्ट देते हैं। और आपने देखा होगा कि पिछले 10 साल में पासपोर्ट के इशू में कितना परिवर्तन आया, कि पासपोर्ट कितनी आसानी से आप लोगों को मिल जाती है, जो पहले नहीं था। पहले महीने लगते थे, कभी कभी साल लगते थे पासपोर्ट मिलने में। अभी 1 हफ्ते, किसी को 2 हफ्ते में पासपोर्ट नहीं मिला तो बहुत शोर मचाते हो, मचाना भी चाहिए। पर जो आपका वीज़ा का सवाल जो था, हमारी कोशिश है कि वी एनकरेज फॉरेन एम्बेसीज सेइंग लुक, प्लीज बी efficient, please be sensitive, please be helpful. And again, this time one of the results of Prime Minister going to America was that they have agreed to establish 2 more consulates in India, so that the visa issue is faster. But in the foreign ministry, we try very hard to help foreign embassies issue visa faster. So I hope you will not have that problem. Thank you. Thank you so much, sir. We are honored here that Shri Vijendra Gupta ji, MLA, is also with us on the dais. Now moving towards closing of the program, I request Professor Ajay Kumar Sharma, Director NIT Delhi, for a vote of thanks. Good morning to all of you. Respected Minister of External Affairs, Shri S Jaishankar ji, Member of Parliament Padma Shri Hansraj Hans ji, BJP President Delhi Shri Virendra Sachdeva ji, distinguished guests, local administration, faculty members, staff members, and my dear students. On behalf of NIT Delhi and on my behalf, it is my privilege and honor to extend heartfelt vote of thanks to the esteemed dignitaries who have graced this occasion with their presence today. We are indeed fortunate to have Shri S Jaishankar ji, a distinguished statesman and a visionary leader, as our esteemed guest today. Sir, your continuous dedication and commitment to the field of external affairs have made great impact on our nation's diplomacy and global standing. The address you delivered to our students and faculty was truly enlightening, and it has left an everlasting impression on all of us. Your valuable insights, experiences, and vision for the future have encouraged our students to aim higher and strive for their future. Your presence has brought immense joy and encouragement to the engineering community. We are equally honored to have Padma Shri Hansraj Hans ji with us. Sir, your remarkable contribution to the field of music and your unwavering commitment for promoting cultural branding have earned huge respect and regard. Your presence today has added a touch of melody to this event, and we are truly grateful for your gracious presence. Furthermore, I would like to extend my heartfelt thanks to Shri Virendra Sachdeva ji, the President of Bharatiya Janata Party, Delhi State. We are grateful for your presence and your encouraging words. A special note of appreciation goes out to esteemed faculty for their constant efforts in shaping young minds of NIT Delhi, who have made a significant contribution to this institution. That is why NIT Delhi ranked 51 in top 100 engineering institutions in India this year
after 2016. I believe that your contribution towards the institution and mentorship for NIT Delhi students will continue in future. I would like to express my gratitude to the diligent staff members who have worked day and night behind the scenes to ensure the success of this event. I appreciate your efforts and thank you for your contribution. I would like to extend my sincere thanks to the students who have participated in this event and made this occasion significant. Your active engagement have added color and vibrancy to this gathering. At the last but not least, I would like to express my gratitude to all the members of media who have covered this event. In conclusion, on behalf of the entire NIT Delhi family, I extend my sincere thanks to our Honorable Minister of External Affairs, distinguished guests, local administration, faculty members, staff, students and media for making this program unforgettable experience. Thank you once again. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you so much, sir. I request all the faculties to assemble near the dais for a group photograph, please. Only the faculties, please. Faculty and staff. Now I request all the research scholars, students present in the auditorium for the group photograph, please. All the students, research scholars of NIT Delhi are kindly requested to come near the dais for the group photograph, please. We can do one thing, all the PhD scholars can have a one group photograph and MTech and BTech students together on one photograph. All the PhD scholars please gather together for a single photograph and all the MTech and BTech students together in the another photograph. One day.